Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. My today's lecture is Factors Governing Drug Design. I'm Dr. Amreen Ghani from University of Education, Vihari campus. Today we are going to talk about what is a drug, its historical perspective, and the job of a medicinal chemist, and finally the factors governing the drug designs. Actually, what are the factors which should we keep in front for designing the drugs? The first point is the what is the drug? We know drug is any substance that changes or enhances the physiological function of the body. Actually, the historical perspective, if we study about the history of the medicines in ancient times, peoples used a wide range of natural products for medicinal purposes. Actually, they use these plants or herbs or shrubs for the treatment of different diseases, and they obtained these drugs from any sources, any natural sources like animals, vegetables, mineral sources, or trees, and even plants. And these have been used for thousands of years to eliminate the pain or illness, or for they also used for the anesthetic purposes. So by trial and error, the old people or the ancient people learned about which herbs, berries, roots, barks could be used for medicinal purposes. But there was no knowledge about the reason or structure of these shrubs or natural sources. Okay, what is the factor, or what is the actual content of the that natural drug or herb or berries or roots etc. is the cause of cureness. किस वजह से क्योर हो रही हैं, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से वो डिजीज क्योर हो रही है. That's why then the knowledge about natural medicines was passed down from generation to generation, which without any understanding of how drugs actually worked. So, drugs are strictly defined as chemical substances that are used to prevent or cure diseases in humans, animals, and plants. The activity of a drug is its pharmacological effect on the subject. For example, its analgesic or beta blocker action. Actually, the drugs act by interfering with biological processes, so no drug is completely safe. We can't say that all the drugs or any drug can be completely safe. No drugs are 100% completely safe. Actually, there is a proper dose or proper treatment is required for any disease. All drugs can act as poisons if taken in excess. For example, overdose of paracetamol can cause coma and death. So, in order to take the drugs, we should be very careful about the quantity or amount of the dose of the drug. So,
Now, the goal of the medicinal chemist. If we talk about the purpose or goal of the medicinal chemist, the primary objective of the medicinal chemist is the design and discovery of new compounds that are suitable for use as drugs. Now, beta, the discovery of a new drugs requires not only its design and synthesis, but also the development of testing methods and procedures which are needed to establish how a substance operates in the body and its suitably for use as a drug. While drug discovery may also require fundamental research into the biological and chemical nature of diseased state. First of all, जब हम ड्रग डिस्कवरी की बात करते हैं बेटा, तो हमें कोई डिजीज़, कोई सिचुएशन, कोई किसी चैलेंज का सामना होता है, तो हम उसके बारे में, उसकी ड्रग्स के बारे में सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल दीज डेज द नोवल कोविड या कोरोना वायरस का प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है. तो इस तरह की कोई एपिडेमिक डिजीज़ आती है या कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का जब हमें सामना करना पड़ता है, तो मेडिसिनल केमिस्ट जो है वो ड्रग्स डिज़ाइन करते हैं with respect to the diseased state. So, to find compounds that have potent effects on given diseases with minimum side effects, a drug must react selectively with its target and have minimal negative effects. For example, students, जैसे आजकल कोरोना वायरस के सिलसिले में इटली में ये बताया जा रहा है कि इटली के लोगों ने पैनाडोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके सिम्टम्स फीवर था, सोर थ्रोट था. तो पैनाडोल जो थी वो आम फीवर में तो वर्क करती है, लेकिन ये पैनाडोल और ब्रूफीन जो है ये कोरोना वायरस पे इतना इफेक्ट उन्होंने नहीं किया जितना कि ह्यूमन बीइंग्स को इसने टारगेट किया. तो सेलेक्टिवली हमें ड्रग को चूज करना चाहिए कि उसकी सिलेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो और साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमम हो. तो a drug must get to the right place in the body at the right concentration and at the right time. During drug design हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि ड्रग जो है वो राइट प्लेस पे जाए बॉडी की, जहाँ पे क्योरनेस की ज़रूरत है, उसकी अमाउंट या उसकी डोज डिज़ाइन करना और उसका टाइम. इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे रैशनल ड्रग डिज़ाइन वगैरह में कि ड्यूरिंग ड्रग डिज़ाइन हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं. फार्माकोकाइनेटिक्स में हम उसका टाइम, उसकी कंसंट्रेशन, कि कितने टाइम में ड्रग जो है वो जब हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद कितने टाइम में वो एब्जॉर्ब होगी, कितने टाइम में डिस्ट्रीब्यूट होगी, कितनी उसकी मेटाबॉलिज्म होगा और कहाँ जाके वो अपना एक्शन जो है वो प्ले करेगी. सो ये सारी चीज़ें आती हैं, comes under the pharmacokinetics. Drugs must have the appropriate solubility to allow it to be transported to the target cell. अब अगर आपके पास कोई ऐसी ड्रग है which is not soluble in polar molecules, then how it would be transported to the target site and how it will cure the disease. If it is taken orally, the drug must be insensitive to the acid conditions of the stomach, and it also must resist enzymatic degradation by the liver before it reaches its target time. Means
हमें सिर्फ उसके फाइनल साइड इफ़ेक्ट्स को ही नहीं देखना. ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन we should also consider the insensitivity of the stomach conditions or any resistance by the body organs. All these points should be considered in mind. Finally, it must eventually be either excreted or degraded or to harmless compounds that can be excreted. After absorption and after its metabolism, the drug must be excreted from the body. And we also study the excretion time, after how much time the drug is excreted from the body. So all these factors should be considered and are considered by the medicinal chemist in order to design the drug. Now we come towards the factors during the drug design. There are some factors I have listed down towards the evaluation of drug design. First of all is the smaller the expenditure of human and material resources involved to evolve a new drug of a particular value, the more viable is the drug is the design of the program. During drug design, we should also keep in mind about the expenditure and expenses of human and material resources, because it would not be a good approach if we use so much amount of money and the expenditure of human beings during clinical trials. This would not be a good approach, because when that drug will come in the market, it would be very much expensive and everyone can't afford it. So ड्यूरिंग ड्रग डिज़ाइन इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज या जो कॉस्ट है इसकी वो हमें बहुत ज़्यादा पे ना करनी पड़े. Drugs are essential for prevention and treatment of disease, so human life is constantly threatened by many diseases like cancer, TB, etc., HIV, HCV. Therefore, ideal drugs are always in great demand. To meet the challenges of ideal drugs, an efficient method of drug development is demanding. The process of drug development is challenging, time-consuming, expensive, and requires consideration of many aspects. To fulfill these challenges, several multidisciplinary approaches are required for the process of drug development. Collectively, these approaches would form the basis of rational drug design. All of these points I have discussed as during the drug development, as the current situation I have exemplified. We need efficient method of drug development. So the process of drug development is very time consuming, challenging, and expensive. So to fulfill all these aspects, there are the multi approaches are required. Next is the experimental animal and clinical screening operations of new drugs. When the new drug is synthesized or prepared, the second step is the clinical trials. On the first of all on the animals, then on the human beings. During clinical trials, we study the pharmacokinetics and pharmacodynamics of the drug. This is the actually the study of the response of the drug, how the drug responds on the living organisms. So what kind of responses we should study and we need actually.
It is important for a drug to have a minimum of undesirable side effects. A drug must be administered in sufficient quantity to achieve a therapeutic effect. Actually, during this step, we design the dose of a drug. How much amount of a drug is required? Actually, जब हम देखते हैं आपने ड्रग्स ज़िंदगी में कभी खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ी होगी कोई भी मेडिसिन लेने की, तो उसमें कभी आपने देखा होगा कि ड्रग की एक स्पेसिफिक डोज होती है. फॉर एग्जांपल 5 mg की टैबलेट है, 100 mg की टैबलेट है, तो वो हमें डोज डिज़ाइन करते हैं ड्यूरिंग द क्लिनिकल ट्रायल्स. However, too much of a drug can be lethal. अगर हम बहुत ज़्यादा एक ड्रग की डोज दे देंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगी. So, the therapeutic index of a drug is the ratio of the lethal dose to the therapeutic dose. अब हमें ये डोज डिज़ाइन करनी पड़ती है, एक्चुअली डिफाइन करनी पड़ती है कि कितनी हमें डोज जो है वो रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज. The higher the therapeutic index, the greater is the margin of safety of the drug. इनकी एक लीथल डोज जो कि हमारे लिए सेफ है, हमारे लिए बेनिफिट है टू क्योर द डिसीज. अगर हम थेरेप्यूटिक डोज से उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है लीथल डोज की, तो वो हमारे लिए जो है वो एक सेफ अप्रोच होगी. तो बेटे इसके अलावा हम ये भी देखते हैं ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स कि ड्रग हमारे बॉडी के अंदर कितनी देर तक स्टे करेगी, मीन्स कितनी टाइम के बाद वो एक्सक्रीट करेगी हमारे बॉडी के अंदर से. फॉर एग्जांपल, अगर एक ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं, लेते हैं ऑरली, और उसको एब्जॉर्ब होने में, मेटाबोलाइज होने में और टारगेट साइट तक जाने में और क्योर करने में फॉर एग्जांपल बहुत कम टाइम लगता है, बहुत शॉर्ट टाइम लगता है, और वो ड्रग बहुत जल्दी एक्सक्रीट हो जाती है थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट वुड नॉट बी अ गुड अप्रोच. इसलिए because we have to intake the another dose of the drug, we have to take the drug again and again in a day. And the other factor is, if the drug excretes from the body after taking so much time, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद वो डोज वो जो ड्रग है वो एक्सक्रीट हो रही है, to some extent that is also not a good approach, because as much time the drug remains in our body, it can also cause some side effects. So in order to avoid the these type of side effects, we have to decide the lethal dose of the drug. Now comes towards the relationships between chemical features and biological properties need to be established. अब वो कौन से ग्रुप्स ड्रग के अंदर हों, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स या कौन से फीचर्स अटैच हों जिनकी जो है हमें रिक्वायर्ड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हम हासिल कर सकें. Compounds with similar structures to a pharmacologically active drug are often themselves biologically active. बेटा समटाइम्स ऐसा होता है कि एक कंपाउंड्स उनके स्ट्रक्चर अगर बहुत सिमिलर हैं, उनके साथ बहुत सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी एक्टिविटी भी सेम हो. उनकी एक्टिविटी सेम हो भी सकती है और बहुत डिफरेंट भी हो सकती है. उनके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर and the effects or the properties of that drug.
So this activity may be either similar to that of the original compound but different in potency. हाँ, एक चीज, वो उसका जो पोटेंशियल है उन स्ट्रक्चर का या ग्रुप्स का, वो भी डिफरेंट हो सकता है. And unwanted side effects are completely different to that exhibited by the original compounds. These structurally related activities are commonly referred to as structure-activity relationship. Actually, during structure-activity relationship studies, हम क्या स्टडी करते हैं कि अगर एक जो है लीड कंपाउंड है या बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एनाल्जेसिक एक्टिविटी है, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, तो अगर हम उसके डेरिवेटिव्स बनाते हैं, सपोज एक ड्रग के जो है उसके साथ में उसकी किसी पोजीशन पे क्लोरीन हम अटैच कर देते हैं या कोई नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देते हैं, हमारे पास वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स या वैरायटी ऑफ रिएजेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं. तो उसके लगाने से हम उसकी एक्टिविटी दोबारा से चेक करेंगे, आइदर बाय अटैचिंग दिस फंक्शनल ग्रुप. उस ड्रग की एक्टिविटी आइदर एनहेंस हुई है, डिक्रीज हुई है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं या कोई साइड इफेक्ट्स बढ़ गए हैं. ऑल दीज स्टडीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप्स. So a study of structure-activity relationships of a lead compound and its analogues may be used to determine the parts of the structure of lead compound that are responsible for both its beneficial biological activity, that is its pharmacophore, and also its unwanted side effects. तो बेटा वो ग्रुप अटैच करने के बाद हम जो है वो उसकी बेनिफिशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी हमें देखना पड़ता है और उसके साइड इफेक्ट्स को भी कंसीडर करना पड़ता है. This information may be used to develop a new drug that has increased activity, a different activity from an existing drug, and fewer unwanted side effects. During SAR studies हम ये देखते हैं कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई केमिकल फीचर हमने चेंज किया है या इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे. थर्ड इज द क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. इट्स फोर्थ पॉइंट. QSARs vary to an appreciable extent in depth and sophistication based on the nature of evaluation of structure or activity. This is also a very important point during the drug development or the drug design. A purposeful relation of structural variables must include steric factors, electronic features of component, functional groups, and in general the molecule as a whole. Actually, जब हम कोई ड्रग डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसके अंदर स्ट्रक्चर के कोई स्टेरिक फैक्टर्स, जब ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो वो कैसे एब्जॉर्ब होगी, कहाँ एब्जॉर्ब होगी, किस टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स के साथ वो एब्जॉर्ब होगी और अपने टारगेट साइट तक जाएगी. तो और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स किस तरह से उसका जो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन होगा, वो सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में. In 1960s, a scientist, Corwin Hensch, postulated that the biological activity of a drug depends on two processes. First of all is its distribution, how the drug is distributed in the body, and for example, a drug must be able to get from the point where it enters the body to the receptor, where it exerts its effects. तो बेटा जब हम ड्रग इनटेक करते हैं, वो एब्जॉर्ब होती है, मेटाबोलाइट्स उसके बनते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, अपने टारगेट साइट पे कैसे जाती है. डेफिनेटली टारगेट साइट पे जाने के लिए उसे कोई
कैरियर चाहिए होगा जो उसको लेके स्टमक से उस ड्रग को कैरी करके लेके जाएगा अपनी टारगेट साइट तक. For example, an anesthetic must be able to cross the aqueous milieu and penetrate the lipid barrier of nerve cell membranes. When we use anesthetic drugs, it must cross the blood cells and penetrate the lipid barrier of nerve cells. Actually, nerve cells तक पहुंचने के लिए उसे वो lipid bilayer जो है वो क्रॉस करनी पड़ेगी. Then it would be distributed in the body. The second process is binding. When a drug reaches its receptor, it must interact properly with it. If a drug does not interact or does not bind with the receptor site, then how it will act, how it will cure the disease. So during drug design, these are very important points, that how drug is distributed, how it is transported to the target site, and how it will bind with the target position or the its receptor site. Now if we talk about the hydrophobic character of a drug, the hydrophobic character of a drug is crucial to how easily it crosses cell membranes and may also be important in receptor interactions. Actually, this is the something about the solubility of the drugs and its ability to go through the body to reach the receptor site. Changing substituents on a drug may well have significant effect on its hydrophobic character and hence its biological activity. Therefore, it is important to have a means of predicting this quantitatively. Beta, during drug design and during drug development, the relative solubilities of drugs in aqueous media and lipid tissues of the body play a major part in their absorption and transport to their sites of action. To pass through a membrane, a drug must usually exhibit a reasonable degree of both water and lipid solubility. An appropriate degree of water solubility will often improve drug distribution within the circulatory system as well as the drug action. Actually, water is a polar molecule. So, अगर ड्रग हमारी वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगी, जब हम पानी के साथ ड्रग लेते हैं तो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. As drug has entered the circulatory system either by absorption or by direct administration, its water solubility will influence its ease of transport to the body compartments available to that drug. For this, we have to study the distribution coefficient. The hydrophobic character of a drug can be measured experimentally by testing the drug's relative distribution in N-octane and water mixture. Actually, we carry out a simple clinical experiment that after synthesis of a drug हम उसको dissolve करते हैं N-octanol में और water में. Chloroform, for example, chloroform, diethyl ether, cyclopropane and nitrous oxides. ये तमाम जो है बेटा ये एज द एनेस्थेटिक्स यूज होते थे. एक्चुअली इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल्दो दीज आर नॉट सिमिलर बट दीज act as the same function or perform the same function of anesthetics.
So each of these were put into a mixture of 1-octanol and water. 1-octanol was chosen as the non-polar solvent, or water was a polar solvent, because with its long chain and polar head group it is a good model for biological membrane. अब जो लिपिड बाइलेयर है या मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके लिए ये नॉक्टानोल एक मॉडल के तौर पे हम यूज करते हैं. When the amount of drug dissolving in each of layers was measured, it turned out that they all had a similar distribution coefficient. The ratio of amount dissolving in 1-octanol to the amount dissolving in water. It means ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी ड्रग या तो बहुत ज़्यादा नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो या बहुत ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो. इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या रेशो in non-polar and polar should be same. In other words, the distribution coefficient could be related to biological activity. Compounds with low distribution coefficients, more polar compounds, couldn't penetrate the non-polar cell membranes. अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट लोअर होगा, मीन्स कि वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होंगी और नॉन पोलर सॉल्वेंट में कम होंगी, तो वो हमारे सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी. सो कंपाउंड्स विद ग्रेटर डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट्स, मोर नॉन पोलर कंपाउंड्स कुड नॉट क्रॉस द एक्वस फेज. अब बॉडी के अंदर उसको सर्कुलेट करने के लिए हमें एक्वस फेज भी चाहिए होता है, जैसे अभी मैंने बताया. सो the ratio of the distribution coefficient should carefully जो है वो हमें बहुत स्टडी करना पड़ता है. This meant that the distribution coefficient of a compound could be used to determine whether a compound should be tested in vivo. The technique of relating a property of a series of compounds to biological activity is known as quantitative structure activity relationship. Determining the physical property of a drug cannot take place of in vivo testing, because how the drug will behave once it reaches a suitable receptor can't be predicted by the distribution coefficient alone. Actually, this is the physical property of a drug, और इसको हम इन विवो टेस्टिंग के बगैर नहीं कर सकते. पहले हम इसको लैब टेस्ट करते हैं, फिर हमें इसको इन विवो टेस्टिंग करनी पड़ती है. Nevertheless, QSAR analysis provides a way to lead the chemist to structures with the greatest probability of having the desired biological activity. In this way, molecular modification that would lead to the compounds without the desired activity can be avoided. The next point is the trend to synthesize a huge number of newer medicinal compounds indiscriminately for the exploratory evaluation still prevails, which exclusively reflects the creative genuineness and conceptual functions of a highly individualized expression of novelty by a medicinal chemist. Actually, beta, this is another approach, a more random approach to discover a lead is the combinatorial chemistry. This uses a simultaneous multiple synthesis techniques to produce large numbers of potential leads. These potential leads are subjected to rapid, high throughput biological screening to identify the most active lead compound. Once identified, these lead compounds are subjected to further development. During this combinatorial approach, हम ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स सिंथेसाइज करते हैं, उनकी बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग करते हैं. उनमें से जो हमारे पास मोस्ट पोटेंशियल जो कंपाउंड है वो लीड कंपाउंड हम सिलेक्ट करते हैं और फर्दर उसकी आगे डेवलपमेंट या डेरिवेटाइजेशन करके हम देखते हैं कि कौन सा जो कंपाउंड या कौन सा स्ट्रक्चर है वो मोर पोटेंट होगा. So once synthesized, the compound undergoes initial pharmacological and toxicological testing. The results of these tests enable the
team or the medicinal chemist to decide whether it is profitable to continue development by preparing the analogs, or it will be a suitable for use as a drug or not. Next is the introduction of functional groups in a molecule that need not essentially resemble metabolites but are capable of undergoing bonding interactions with important functional groups of biochemical components of living organisms, and uh, affords an important basis for exploration. Actually, but the selection of a lead compound and the development of a synthetic pathways for its preparation is not the only consideration at the start of an investigation. We also have to consider that about the binding interactions of these functional groups or these compounds with the biochemical components, कि हमारे बॉडी के अंदर जाके इनकी बॉन्डिंग इंटरेक्शंस कैसी होंगी, ये कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे कैरी करके टारगेट साइट तक लेके जाएंगे इसको. तो ये सारी चीज़ें हमें जो है ना कंसीडर करनी पड़ती हैं, because so that the researchers must also devise suitable in vivo and in vitro tests to assess the activity and toxicity of the compounds produced. Now in the last मैं इसमें कुछ बुक्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ. आप फर्दर जो है वो इनको स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको ये पॉइंट्स और क्लियर हो जाएं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.